Hello friends, this is Mr. Abhijit Anand Ayvare, lecturer at Praveen Patil College of Diploma Engineering and Technology, Bhayandar. In this video, we are going to study about a remaining part of the chapter number first of the subject Industrial Measurement, IME, subject code 22420. In the last lecture, we had studied about block diagram of instrumentation system, transducer, need of transducer, comparison between sensor and transducer, as well as classification of transducer based on requirement of the supply. There is a two types: active transducer, passive transducer, and the comparison between active transducer and passive transducer. All these things had been studied in a last lecture. So in this video we are going to study about types, classification of transducer based on nature of output signal. By the nature of output signal, there are two types of transducer. One is the analog transducer, another one is the digital transducer. Then what is the analog transducer? The analog transducer changes the input quantity into the continuous function. Continuous function is a very important thing. These transducer convert input physical quantity into the analog output, which is continuous function of the time. That means the input is a physical quantity, but the output is a analog, which is a continuous function of the time. This is called as a analog transducer. For example, the strain gauge, LVDT, thermocouple, thermistor are the example of the analog transducer. What is the digital transducer? These transducer convert an input quantity into the digital signal or in the form of the pulses. This type of transducer convert an input physical quantity into the discrete steps of the electric output in the form of the pulse. The output is in the digital signal. So by using a ADC, what is an ADC? Analog to digital converter. It is a very important part and it's most considerable part. By using a ADC, analog to digital converter, we can get digital output. For example, rotary encoder, optical encoder, 5-digit scale on digital indication of a linear position of a moving object. All these are the example of a digital transducer. Then the next question is, then what is the difference between analog transducer and the digital transducer? The first and important difference is nature of output. Whenever we consider the analog transducer, then the nature of output is a analog. While whenever we consider the digital transducer, the nature of output is a digital nature. Second one is the conversion. In case of analog transducer, it converts the input quantity in the analog output, which is in the continuous function of the time mode. While whenever in case of a digital transducer, it converts the input quantity into the digital output by using ADC, analog to digital converter. And the third one is a example. The example is a potentiometer, strain gauge is the example of a analog transducer, while rotary encoder, optical encoder, 5-digit scale for a digital indication of a linear position of a moving object is the example of a digital transducer. Now, the next comparison of the classification of the transducer is the classification of transducer based on the connectivity with the measurand. बेस्ड ऑन द कनेक्टिविटी विद द मेजर हैंड, मतलब इनपुट के साथ कितनी कनेक्टिविटी, उस पर दो टाइप के ट्रांसड्यूसर डिपेंड है. वो है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, अनदर वन इज द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. Transducer which directly come in contact with a measuring quantity, just like a temperature, pressure, that is a measure and acts as a sensor to sense, detect that physical quantity is called as a primary transducer. Primary transducer मतलब सिर्फ एक ही ट्रांसड्यूसर है जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट के कांटेक्ट में है.
अदर डेफिनेशन हम देखी जाए तो द ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर. A transducer which directly come in contact with a measuring quantity just like temperature, pressure, and acts as a sensor to sense the physical quantity is called as a primary transducer. For example, thermistor used for temperature measurement. When there is a change in temperature, resistance of a thermistor also changes. Temperature is measured in the terms of the resistance. Take the case of Bourdon tube. It acts as a primary transducer, senses the pressure and convert it into the displacement, that is a mechanical displacement, and its free end. This is the example of a primary transducer. Bourdon tube, diaphragm, bellows are the exact example of the primary transducer. The force detected by the column in first, and hence it is called as a primary transducer. Now we are going to consider the secondary transducer. It is a subtype of the transducer based on the connectivity with a major end. Direct use of a primary transducer many a time does not prove to measure the major end. So another transducer is needed called as a secondary transducer. बहुत बार सिर्फ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इज सिर्फ काफ़ी नहीं है कि मेजरमेंट को मेजर करने के लिए. सो दैट देयर आर अनदर ट्रांसड्यूसर इज रिक्वायर्ड एंड सच अनदर ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी transducer. The output of a primary transducer is an input of the secondary transducer. That means whenever we consider the secondary transducer, firstly we connect the primary transducer, then it connected to the secondary transducer. So that's why the output of the primary transducer is an input of the secondary transducer, whose output is the measurement of the input quantity. सबसे पहले इनपुट क्वांटिटी आएगी, फिर उसके बाद प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, फिर उसके बाद आएगा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एंड देन आउटपुट क्वांटिटी आएगी. ओके. The output of a primary transducer is an input of the secondary transducer, whose output is measured to the input quantity in the calibrated scale. Pressure measurement by the using a bellow with LVDT. Well, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग अ बेलो. सो दैट्स वाई यहाँ पे बेलो कौन है? बेलो इज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर. ओके, बट बेलो ही सिर्फ काफ़ी नहीं है डिस्प्लेसमेंट करेंगे. सो बेलो का आउटपुट जो आएगा वो है डिस्प्लेसमेंट, वो जाएगा मुझे एलवीडीटी के लिए, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर. ओके, इस एलवीडीटी के लिए जाएगा. ए एलवीडीटी हमें क्या करेगा? ये होगा इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर एंड इट गिव्स अ आउटपुट वोल्टेज. सो दैट्स वाई प्रेशर का कन्वर्जन वोल्टेज में हो गया. अब तक अगर सिर्फ हम बेलो यूज़ करते तो प्रेशर का कन्वर्जन डिस्प्लेसमेंट में हो जाता, लेकिन हमारे प्रेशर का कन्वर्जन वोल्टेज में करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे दो ट्रांसड्यूसर लेना पड़ेगा. सबसे पहला जो ट्रांसड्यूसर है वो है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, जो कि बेलो है. बेलो क्या करेगा? प्रेशर का कन्वर्जन डिस्प्लेसमेंट में करेगा. यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एलवीडीटी का इनपुट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है एलवीडीटी को इनपुट हो जाएगा और आउटपुट मिलेगा हमें आउटपुट वोल्टेज. सो दैट्स वाई प्रेशर मेजरमेंट बाय अ बेलो विथ एलवीडीटी इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. नाउ pressure measured by a Bourdon tube with a LVDT. It is also another example of the secondary transducer. Pressure measurement by the Bourdon tube. Bourdon tube को pressure measure किया, उसके बाद when a pressure is applied to the Bourdon tube, its free end moves displacement. This is a primary transducer action. मतलब यहाँ पे Bourdon tube क्या कर रहे हैं? प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का काम कर रहे हैं. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय अ पुली. यहाँ पे हमें पुली दिखाई दे रही है, ये जो पुली हमें दिखाई दे रही है, इसका जो है प्रेशर यहाँ से मिलेगा, ये बर्डन ट्यूब है, इसकी वजह से डिस्प्लेट में मिलेगी. ये डिस्प्लेसमेंट ये पुली के थ्रू हमें डिस्प्लेसमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय अ पुली स्ट्रिंग अरेंजमेंट टू द मैग्नेटिक कोर. ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक कोर दे रहे हैं आपको वहाँ पे, इट मूव्स इन द गैप ऑफ द प्राइमरी एंड डिवाइडेड इनटू द
टू पार्ट्स ऑफ द सेकेंडरी, ये प्राइमरी एक साइड है और सेकेंडरी टू पार्ट्स में हमें डिवाइड हुआ है। सेकेंड आउटपुट वोल्टेज हमें सेकेंडरी की साइड ही मिलेगा। इन सेकेंडरी द रिजल्टेंट वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू V1 माइनस V2 and it is calibrated to read the pressure. So that's why pressure is converted into output voltage by using a burden tube as well as a magnetic core. So that's why a pressure burden tube and LVDT is the example of the secondary transducer. But there are a question that is a compare between प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सबसे पहला कंपेरिजन आएगा नेचर। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर मोस्टली दीज आर अ सेंसर ही होते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। बट सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर दीज आर अ ट्रांस कंडक्शन एलिमेंट, एक ट्रांस कंडक्शन एलिमेंट है जो दूसरे के आउटपुट को इनपुट बना के आउटपुट में जो चाहिए वो क्वांटिटी दे सकता है। ओके, कॉन्टैक्ट या फिर कनेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मेजरेंट इन केस ऑफ द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। अगर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है मेजरेंट के, लेकिन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है तो वो डायरेक्ट मेजरेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आता। कनेक्शन विद अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इज कनेक्टेड टू द मेजरेंट। ओके, एंड थर्ड वन इज अ एग्जाम्पल। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एग्जाम्पल है बर्डन ट्यूब बेलो, while a secondary transducer example is LVDT. All these things are studied in this video. Thank you so much.